Students, Jinali Shah welcomes you all on behalf of Saraswat International Academy. Today we will begin with the next part of the chapter excretory products and their elimination. Students, in the previous lecture we have studied regarding the structure of nephron, what is nephron as well as which are the different types of the nephron. Now students, what is the importance of the nephrons? So basically they are the structural and functional units of the kidneys, and it is the nephrons of the kidneys which are involved in the formation of the urine, and it is through this urine that the excretory waste materials are eliminated. So in today's lecture, first of all we will be studying how the urine formation process takes place. So basically the formation of urine is called as uropoiesis. What is it called as? It is called as uropoiesis. Now this urine formation, it takes place in 3 stages. So it involves basically 3 main processes. First is glomerular filtration, second one is reabsorption, and third one is the secretion. So these are the 3 steps of the urine formation. Name suggests glomerular filtration. So what is present in it occurs in glomerulus. What is glomerulus? They are the group of capillaries in the Bowman's capsule. Now we know that the glomerulus have the pores, and through that pores the blood will be filtered in the glomerulus, and that filtered blood now will be called as the filtrate, right? Then reabsorption. It is called as selective reabsorption or also called as the tubular reabsorption. इसको ट्यूब्यूलर रीएब्सॉर्प्शन इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इट अकर्स इन द ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स, दैट इज पीसीटी, हैंडलेस लूप, डीसीटी, एंड इट इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन बिकॉज certain substances present in the filtrate they are reabsorbed, they are absorbed. क्यों reabsorption बोला है? Already as they are present in the blood they have been absorbed one time. Now again from the filtrate they are absorbed, and hence it is called as the reabsorption. And third one is the secretion, that the certain substances will be directly secreted in the tubular part of the nephron. So that is called as the tubular secretion. Now all these processes they take place in different parts of the nephron. Glomerular filtration, name itself suggests it occurs in the glomerulus, whereas the secretion and reabsorption it occurs in the tubular part of the nephrons, which involves the PCT, which involves the Henle's loop, as well as it involves the DCT. So these are the various steps of the urine formation. Now let us study the first step of the urine formation, that is the glomerular filtration. So it is the filtration of the blood which is carried out by glomerulus and is called as the glomerular filtration. So the first step of the urine formation is the glomerular filtration, and this glomerular filtration takes place in the glomerulus, okay, and hence it is called as glomerular filtration. Now how filtration is possible in glomerulus? So हमने glomerulus का structure study किया था कि उनके अंदर pores होते हैं, right? They have the pores which are called as the fenestra. And another thing is blood flowing in the glomerulus is under the high pressure. Now why high pressure blood is there in the blood flowing through the glomerulus? Now who supplies the blood to the glomerulus? It is the afferent arteriole. Now the diameter, or you can say the cavity of the afferent arteriole is more, or it is wider than the glomerulus, or you can say glomerular capillaries narrow होती है compared to the afferent arteriole. So due to this smaller diameter, or due to its narrow diameter, the blood flowing within the glomerulus will be under the high pressure, and this high pressure of the blood allows the filtration, okay. Now on an average 1100 ml to 1200 ml of the blood is filtered by the kidney per minute, which constitutes the roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute. So on an average कितना blood कितनी filter करती है per minute? So it is
1100 to 1200 ml, which constitutes roughly 1/5 of the blood pumped out by the each ventricle. There is a difference in the diameter of the afferent arteriole and efferent arteriole. Afferent arteriole diameter is wider than the efferent arteriole, and also it is wider than the glomerular capillaries. So as the blood flows in glomerulus with pressure, and under this pressure the filtration takes place. So blood flowing within the glomerulus is under the pressure, and this pressure within the glomerulus helps in the filtration of the blood. The glomerular capillary blood pressure causes filtration of the blood through 3 layers. Now ये glomerular capillaries blood का filtration 3 layers में करता है. See, first is the glomerulus. So glomerulus का pores होते हैं. What are these pores called as? These are called as the fenestra. What are they called as? Fenestra. नाउ ये ग्लोमेरुलस किसकी बनी है? एंडोथीलियम. सो एंडोथीलियम सेल किस पे रेस्ट करते हैं? सो बेसमेंट मेम्ब्रेन. एंड देन फाइनली इट इज़ द बाउमेन्स कैप्सूल. ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है. सो दिस इज द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, दिस इज द इनर वॉल ऑफ द बाउमेन्स कैप्सूल, एंड ग्लोमेरुलर सेल्स किसके ऊपर रेस्ट करते हैं? एंडोथीलियल सेल, बेसमेंट मेम्ब्रेन. सो देर आर 3 layers. वन इज एंडोथीलियम ऑफ द glomerulus, then basement membrane, and then there is the inner wall of the Bowman's capsule. So the blood filtration occurs through how many layers? 3 layers. The endothelium of the glomerular blood vessels, the epithelium of Bowman's capsule, and the basement membrane between these 2 layers. So there are 3 layers. Again I will show you. Suppose this is the Bowman's capsule. Now this Bowman's capsule consists of the glomerulus. So ये glomerulus का endothelium, ये उसका basement membrane, and this is the epithelium of the Bowman's capsule. So there are 3 layers which will help in the filtration of the blood. The epithelial cells of the Bowman's capsule called podocytes are arranged in an intricate manner so as to leave some minute spaces called as filtration slits or slit pores. नाउ जैसे हमने एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में ये देखा था कि उनमें क्या होते हैं? पोर्स होते हैं. ये पोर्स को क्या बोलते हैं? फेनेस्ट्रा. नाउ बाउमेन्स कैप्सूल का जो इनर वॉल है उसके जो सेल्स है उसको बोलते हैं पोडोसाइट्स. नाउ दिस पोडोसाइट्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट दे लीव सर्टेन गैप्स बिटवीन देम, and the gaps formed by the podocyte is called as the filtration slits or slit pores. Blood is filtered so finely through these membranes that almost all the constituents of the plasma except the proteins pass into the Bowman's capsule. Now ये जो filtration का process ऐसा proper है कि प्लाज्मा, ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, each of the constituent of the plasma will be filtered except for the proteins of the plasma. The proteins of the plasma, they won't be filtered, okay? They won't pass into the lumen of the Bowman's capsule due to their larger size. So we can say this process is therefore called as the ultrafiltration. ये process को हम क्या बोलते हैं? Ultrafiltration बोलते हैं. क्यों ultrafiltration बोलते हैं? Because all the substances of the plasma except for the larger proteins are filtered in the filtrate. The amount of the filtrate formed by the kidneys per minute is called glomerular filtration rate. How much filtrate is formed by the kidney in a minute? That is called as the glomerular filtration rate. So GFR of an healthy individual is approximately 125 ml per minute. So how much filtrate is formed in a minute? It is approximately 125 ml. So we can say that approximately 180 liters of filtrate is produced per day. Now say students, I told you that filtration में सब पूरा filtration plasma का हो जाता है except for the larger proteins. These larger proteins are not filtered, right? Otherwise all the components of the plasma will be present in the filtrate. So question arises student, क्या body as it is filter को process किया बिना as it is, can we afford to lose that filtrate? No.
because that filtrate consists of the useful materials. So use along with the nitrogenous waste. So useful substances जो filtrate में होते हैं उसको reabsorb करना ज़रूरी है. Otherwise body will be basically starving of the nutrients as well as there will be dehydration because it is full of water. So अपने को बॉडी में ऐसे मैकेनिज्म है कि फिल्ट्रेट क्या हो सके, रीएब्सॉर्ब हो सके. सो दैट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ द urine formation, that is the tubular reabsorption. But before that, how glomerular filtration is regulated? So regulation of the glomerular filtration, or what is the role of JGA? We have studied JGA is the juxtaglomerular apparatus. So it is the juxtaglomerular apparatus which will maintain the glomerular filtration rate. How juxtaglomerular apparatus maintains the glomerular filtration rate? The kidneys have built-in mechanisms for the regulation of the glomerular filtration rate. किडनीज के खुद के पास ही ऐसे मैकेनिज्म है जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करते हैं. One such efficient mechanism is carried out by juxtaglomerular apparatus, that is JGA. JGA is a spatial sensitive region formed by the cellular modifications in distal convoluted tubule and afferent arteriole at the location of their contact. So DCT when it comes in contact with afferent arteriole, यहाँ पे certain cells are modified and these modified cells are called as juxtaglomerular apparatus. A fall in GFR can activate the juxtaglomerular cells to release renin, which can stimulate the glomerular blood flow and thereby glomerular filtration rate back to normal. अगर glomerular filtration rate डिक्रीज हुआ तो juxtaglomerular cells एक्टिव हो गए एंड वो क्या सिक्रेट करेंगे, रेनिन. अभी रेनिन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगा एंड हेंस the glomerular filtration rate comes back to normal. Now how renin is responsible to increase the glomerular blood flow, वो हम रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में पूरा juxtaglomerular apparatus स्टडी करेंगे, तब ज़्यादा क्लियर होगा. Now second step is the reabsorption. A comparison of the volume of the filtrate formed per day, which is 150 liters, 180 liters, whereas the urine released is approximately only 1.5 liters. टोटल फिल्ट्रेट कितना बनता है पूरे दिन में, 180 लीटर्स, और उसमें से टोटल यूरिन अप्रॉक्सीमेटली कितना बनता है, on an average it is 1.5 liters only. So what can we say, 99% of the filtrate is reabsorbed. It suggests that nearly 99% of the filtrate has to be reabsorbed by the renal tubules. So very important, where reabsorption takes place, it occurs in the renal tubules, which involves PCT, Henle's loop and DCT. This process is called reabsorption. The tubular epithelial cells in the different regions of the nephron perform this either by active or passive transport mechanism. So who performs reabsorption? Reabsorption is performed by the tubular part of the nephrons, कि जहाँ पे पर्टिकुलर एपिथेलियल सेल्स होते हैं. नाउ एपिथेलियल सेल्स ऑफ द सर्टन रीजन आर हैविंग पिक्यूलरिटीज, लाइक जो पीसीटी है वो मैक्सिमम रीएब्सॉर्प्शन करेगा. अभी पीसीटी के जो सेल्स की पिक्यूलरिटी ये है कि दे हैव द ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियम. विच एपिथेलियम डू दे हैव? ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियम. ब्रश बॉर्डर्ड यानी उनके सरफेस के ऊपर सीलिया, उनके सरफेस के ऊपर माइक्रोविलाई होगा एंड दिस माइक्रोविलाई हेल्प इन द रीएब्सॉर्प्शन ऑफ द वेरियस इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, आयंस एज वेल एज द वाटर ऑल्सो. नाउ स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ये जो रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है वो आइदर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा और बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा. सर्टन आयंस आर एब्सॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सर्टन आयंस आर एब्सॉर्ब बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट. वाटर का रीएब्सॉर्प्शन ऑस्मोसिस से होगा. सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आइदर एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट विल हेल्प इन द एब्सॉर्प्शन.
For example, substances like glucose, amino acids, sodium, etc. in the filtrate are reabsorbed actively. अभी glucose का reabsorption. Now glucose reabsorption is so efficient that even the presence of the minute amount or trace amount of the glucose in the urine is indicative of a condition called as the diabetes mellitus. So we can say कि glucose का reabsorption बहुत 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 efficient होता है. सो ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, पॉजिटिव आयंस लाइक सोडियम है, उनका रीएब्सॉर्प्शन कैसे होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से. वेयर एज द नाइट्रोजिनस वेस्ट्स आर रीएब्सॉर्ब बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट. Reabsorption of the water also occurs passively in the initial segments of the nephron, and passively means it occurs by the process. Movement of the water is explained by the process called as the osmosis. So that is regarding the reabsorption. And the last step of the urine formation is secretion. So certain substances are directly secreted into the tubular part of the nephron. आपकी बुक में मेंशन नहीं किया गया है डिटेल में, बट देर आर सर्टन सब्सटेंसेस जो ग्लोमेरुलस फिल्टर नहीं कर सकता है. सो such substances which are not filtered but harmful to the body needs to be removed outside the body. जैसे सर्टन ड्रग्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, इनका फिल्ट्रेशन नहीं होता है, but they need to be removed outside the body. So directly ये substances tubular part में secrete होते हैं and then they will be removed. During urine formation, tubular cells secretes H+, K+ and ammonia into the filtrate. It is an important step in urine formation as it helps in maintaining the ionic and acid-base balance of the body. So ion का balance, pH का balance, water का balance, tubular secretion properly maintain करता है. Now, what are the functions of the different parts of the tubules? हमें मालूम है कि जैसे ही filtrate बनेगा, once filtrate is produced by the glomerulus, it passes through the different region of the nephron, and we know that जो filtrate glomerulus बनाता है उसका composition क्या है? प्लाज्मा के सिमिलर है. So this filtrate as it gradually passes from one part of the nephron to next, उसके अंदर certain changes आते रहते हैं. So what changes occurs in the tubular part of the nephrons? Filtrate produced by glomerulus is approximately similar to blood plasma. Gradually passing through nephron, its composition changes and urine is formed. So what are the changes occurring in the proximal convoluted tubule? PCT is lined by simple cuboidal brush bordered epithelium which increases the surface area of reabsorption. So PCT की peculiarity क्या है? It is lined by the brush bordered cuboidal epithelium. Now ये जो brush bordered epithelium होता है उनके free surface पे क्या होता है? Microvilli. And we know the role of microvilli. It increases the area of the reabsorption. Nearly all the essential nutrients and 70 to 80% of electrolytes and water are reabsorbed by these segments. So PCT is the most important region of the nephron के जहाँ पे maximum substances का reabsorption हो जाता है. जैसे न्यूट्रिएंट्स यानी कि अमाइनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन्स, बफर लाइक बाइकार्बोनेट आयन्स एज वेल एज वाटर, ये सब ये रीजन में रीएब्सॉर्ब हो जाएंगे. नाउ दिस PCT also maintains the pH and ionic balance of the body fluids. वो क्या करता है? रीएब्सॉर्प्शन भी करता है, along with reabsorption वो pH को भी मेंटेन करता है एंड ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है. आयोनिक बैलेंस इज नथिंग बट सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन. So apart from reabsorption, it also maintains the osmoregulation. So how it maintains the ionic balance and pH? By selective secretion of hydrogen ion, ammonia and potassium ion into filtrate and absorption of bicarbonate ion, that is HCO3 minus from it. Very important, how PCT maintains the ionic and pH balance of the body. So it secretes ammonium ion
it secretes hydrogen ion and potassium ion into the filtrate, and filtrate में से buffer, that is bicarbonate ion, that is HCO3 minus ion, it will be absorbed from the filtrate. Now next is Henle's loop. It is said कि जैसे जैसे Henle's loop की length इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे फिल्ट्रेट मोर एंड मोर कॉन्सेंट्रेट होता जाता है. सो रीएब्सॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब. एक्चुअली आपकी बुक में असेंडिंग लिम्ब लिखा है, बट बेसिकली डिसेंडिंग लिम्ब के इनिशियल पार्ट में कोई रीएब्सॉर्प्शन होता नहीं है. However, this region is playing a significant role in maintenance of high osmolarity of the medullary interstitial fluid. Now ये Henle's loop है, ये cortical portion है किडनी का, ये medullary portion है. Now ये वाला जो portion है, this region is called as the interstitial fluid. So ये जो ascending limb है, ascending limb is permeable to electrolytes, यानी सोडियम आयन, क्लोराइड आयन से ये permeable है. सो असेंडिंग लिम्ब क्या करेगी, फिल्ट्रेट में से सोडियम आयन, क्लोराइड आयन कहाँ पे डाल देगी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में. इंटरस्टिशियल फ्लूइड में वो आयन्स चली जाएंगे, यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, राइट. सो दिस रीजन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलारिटी of the medullary interstitial fluid. The descending limb of Henle's loop is permeable to water but is impermeable to electrolytes. आपको दो चीज़ें याद रखनी है. This is descending limb, this is ascending limb. Descending limb is permeable to water and it is impermeable to ions, whereas the ascending limb is permeable to ions but it is impermeable to water. Opposite condition. Descending limb water permeable, ions impermeable, whereas ascending limbs ions permeable and water impermeable. The descending limb of loop of Henle is permeable to water but almost impermeable to electrolytes. This concentrates the filtrate as it moves down. क्यों? क्योंकि वाटर का क्या होगा, रीएब्सॉर्प्शन होगा. वो किससे परमिएबल है, वाटर से परमिएबल है, यानी फिल्ट्रेट में से वाटर बाहर निकलेगा. फिल्ट्रेट में से वाटर बाहर निकलेगा यानी फिल्ट्रेट कैसा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट होगा. द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली. असेंडिंग लिम्ब वाटर इम्परमिएबल है बट आयन से परमिएबल है, एंड वो आयन्स को आइदर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव ट्रांसपोर्ट करेगी. Therefore, as the concentrated filtrate pass upward, it gets diluted due to the passage of the electrolytes to the medullary fluid. बट क्या होता है, सो जैसे जैसे फिल्ट्रेट ऊपर जाता है, आयन्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जा रहे हैं, आयन्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जा रहे हैं, तो ये फिल्ट्रेट कैसा होता जाएगा, डाइल्यूट होता जाएगा. Now what is the role of the distal convoluted tubule? Conditional reabsorption of sodium and water takes place in these segments. क्यों कंडीशनल बोला है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स इन द बॉडी. बॉडी में सॉल्ट का, Na+ का अमाउंट क्या है, वाटर का अमाउंट क्या है, उसके हिसाब से DCT काम करेगा. अगर वाटर का अमाउंट बॉडी में ज़्यादा है तो वो वाटर का रीएब्सॉर्प्शन नहीं करेगा एंड इट विल अलाउ टू पास द डाइल्यूट यूरिन. इफ वाटर इज बेसिकली बॉडी में वाटर की शॉर्टेज है, सो ये टाइम पे DCT की क्या करेगा, वाटर का रीएब्सॉर्प्शन करेगा एंड इट विल प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ द कंसनट्रेटेड यूरिन. इसीलिए उसको कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन बोला. कंडीशनल क्यों बोला, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस इन आवर बॉडी इट विल कैरी आउट द रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर. DCT is also capable of reabsorption of HCO3 minus ion and selective secretion of hydrogen, potassium and ammonia to maintain the pH and sodium potassium balance in the blood. So DCT is also a region which is responsible for maintenance of the pH and ionic concentration of the body fluids. कैसे, so it reabsorbs the buffer, that is bicarbonate ion, HCO3 minus ion, and it secretes hydrogen ion, potassium ion and ammonium ion into the filtrate. Now next is the collecting ducts. This long duct extends from the cortex of the kidney to the inner parts of the medulla. Large amount of water could be reabsorbed from this region to produce the concentrated urine. So the collecting duct can also reabsorb the water and hence concentrated urine can be produced.
This segment allows the small amount of passage of the small amount of urea into the medullary interstitium to keep up the osmolarity. Certain amount of the urea diffuses from collecting duct into the inner medulla to maintain the high concentration of the interstitial fluid. Now, this region also plays the role in maintenance of pH and ionic balance of the blood by the selective secretion of H plus and K plus ion. So, this region also maintains the pH and ionic balance of the body by secretion of H plus and K plus ion. So, that is regarding the general process of urine formation. Now, we human beings या mammals या हायर वर्टिब्रेट जो है उनमें एक ऐसा मैकेनिज्म है कि दे हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द कंसनट्रेटेड यूरिन. सो दिस मैकेनिज्म थ्रू विच द मेमेलियन किडनी और यू कैन से the higher vertebrates they produce concentrated urine is called as the counter current mechanism. So mechanism of concentration of the filtrate. Mammals have the ability to produce a concentrated urine. Concentrated urine का meaning ये होता है कि urine which is more concentrated than the blood. What do you mean by concentrated urine? Urine more concentrated than the blood. अभी ये यूरिन कॉन्सेंट्रेशन के लिए दो स्ट्रक्चर्स प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल. वन इज हेनलेस लूप एंड अनदर वन इज द वासा रेक्टा. सो दिस आर द टू स्ट्रक्चर्स विच प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द osmolarity. Okay, Henle's loop and vasa recta. The flow of the filtrate into limbs of the Henle's loop is in opposite direction and thus forms the counter current. See, abhi there are two limbs of the Henle's loop. Which are those two limbs? This is the descending limb and this is the ascending limb. डिसेंडिंग लिम्ब में जो फिल्ट्रेट है वो किसकी तरफ आ रहा है? मेड्यूला की तरफ आ रहा है. एंड असेंडिंग लिम्ब में जो फिल्ट्रेट पास होता है तो वो कौन सी तरफ मूव हो रहा है? कॉर्टेक्स की तरफ. डिसेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट इज मूविंग टूवर्ड्स मेड्यूला, असेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट इज मूविंग टूवर्ड्स द कॉर्टेक्स. So the flow of the fluid or flow of the filtrate in the Henle's loop in both the limbs of the Henle's loop is in opposite direction. In descending limb, filtrate is moving towards medulla, whereas in ascending limb, the filtrate is moving towards the cortex, and this results in the generation of the counter current pattern. Same way, vasa recta. Vasa recta is a blood capillary. So उसमें कौन सा fluid flow होगा? It is the blood. सो वासा रेक्टा में भी ब्लड कैसे फ्लो होता है? इट मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन. सो से फॉर एग्जांपल ऐसे ब्लड का मूवमेंट हो रहा है ये डायरेक्शन में. सो दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब, दिस इज द असेंडिंग लिम्ब. डिसेंडिंग लिम्ब में द ब्लड इज फ्लोइंग टूवर्ड्स मेड्यूला, असेंडिंग लिम्ब में इट इज मूविंग टूवर्ड्स द कॉर्टेक्स, राइट. So here also as the blood is flowing in opposite direction in vasa recta, it is also forming the counter current pattern. Now the proximity between the Henle's loop and vasa recta, proximity, they are located very close to each other, the nearness between the two structures. So the proximity between Henle's loop and vasa recta as well as the counter current in them help in increasing the osmolarity towards the inner medullary interstitium, that is from 300 milliosmol per liter in cortex to about 1200 milliosmol per liter in inner medulla. So क्या बोला गया है? जैसे जैसे फ्लूइड या फिल्टर इनिशियल पोर्शन में, कॉर्टिकल पोर्शन में क्या कॉन्सेंट्रेशन होता है? इट इज़ 300 मिलीऑस्मोल एंड एज द फ्लूइड पासिस थ्रू द मेडुलरी पोर्शन उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होता जाता है? इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1200 मिलीऑस्मोल. सो उसके वजह से हम ये देख सकते हैं कि फिल्ट्रेट कैसा होता जाता है? कॉन्सेंट्रेट होता जाता है. नब ये जो ग्रेडियंट है, ये जो चेंज है कॉर्टेक्स की तरफ 300 मिलीऑस्मोल एंड टूवर्ड्स द इनर इंटरस्टिशियल मेडुला इट इज़ 1200 मिलीऑस्मोल, उसके लिए ये ग्रेडियंट जनरेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? देयर आर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स. वन इज NaCl and another one is urea. Now we know that ascending limb of Henle's loop is permeable to ions and descending limb is permeable to water. And आपको ये याद रखना है कि पूरा वासा रेक्टा इज परमेबल टू एवरीथिंग. वासा रेक्टा की ascending capillary, descending capillary,
ये दोनों चीज़ें वाटर से परमिएबल है, सोडियम क्लोराइड और यूरिया, ये चार मटेरियल से वो परमिएबल है। NaCl is transported by ascending limb of Henle's loop which is exchanged with the descending limb of vasa recta. Now suppose this is the Henle's loop, ये क्या है, ये Henle's loop है एंड इसमें ही पैरेलल मैनर में क्या अरेंज होगा, सो बेसिकली इट इज़ वासा रेक्टा। ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब है, ये डिसेंडिंग कैपिलरी है और ये असेंडिंग कैपिलरी है। नाउ हेनलेस लूप का असेंडिंग पोर्शन किससे परमिएबल है, सोडियम क्लोराइड से। ये सोडियम क्लोराइड पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वो डिसेंडिंग कैपिलरी में चले जाएगा। नाउ दिस NaCl इज रिटर्न टू इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द वासा रेक्टा। अभी ये डिसेंडिंग कैपिलरी से अभी यहाँ पे जाएगा एंड यहाँ से फिर से NaCl कहाँ पे आ जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। Similarly, small amount of urea enter the thin segment of the ascending limb. Now some urea will enter into the ascending limb which is transported back to the interstitium by the collecting tubule. अभी यहाँ पे ये collecting tubule होगी. So some of the urea enters into from the interstitium into this region and then what will happen, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल फिर से ये यूरिया को इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ला देंगे जिसके वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो द अबव डिस्क्राइब्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फैसिलिटेटेड बाय द स्पेशल arrangement of Henle's loop and vasa recta is called as counter current mechanism. These mechanisms help to maintain the concentration gradient in the medullary interstitium. Presence of such interstitial gradient helps in easy passage of the water from the collecting tubule, thereby concentrating the urine. So interstitial fluid का concentration increase होगा तो what will happen, the collecting tubule will allow that much amount of the water to pass out from the filtrate and filtrate में से water pass होगा यानी urine कैसा होता जाएगा, concentrate होता जाएगा। Human kidneys can produce nearly 4 times concentrated urine, nearly 4 times concentrated than the initial filtrate form. Initial filtrate जो बनता है उसकी जो osmolarity होती है वो 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर एंड यूरिन की होती है 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर. So we can produce 4 times more concentrated urine than the initial filtrate form and its concentration is also 4 times than that of the blood. So that is the diagram showing the counter current mechanism. This is a vasa recta and this is a nephron. ये vasa recta की descending capillary है, ये उसकी ascending capillary है, ये Henle's loop का descending limb है and ये उसका ascending limb है. सी देखो ये NaCl असेंडिंग लिम्ब में से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आया एंड ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से NaCl कहाँ पे चला गया, इट हैव एंटर्ड इनटू द डिसेंडिंग कैपिलरी. डिसेंडिंग कैपिलरी से NaCl असेंडिंग कैपिलरी में आया एंड NaCl फिर से कहाँ पे आ गया, इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड. सो आप देख सकते हो कि जो इनिशियल फिल्ट्रेट है उसकी ऑस्मोलारिटी 300 ऑस्मोल पर लीटर है एंड यहाँ पे जब आता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में उसकी ऑस्मोलारिटी क्या होती है, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर. सो दिस इज हाउ दिस टू स्ट्रक्चर्स हेल्प्स इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट. I end my lecture here. In the next lecture we will study regarding the regulation of the kidney function. We will study a process called as micturition and also we will study some disorders related to the excretory system. Thank you students.